Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online and our second video on Introduction to Biology, which is a continuation of our previous video in, in which we will continue to discuss some of the major specialities, their definitions, and finally their scope, what sort of careers they carry in the different parts of the world. So coming to the learning objectives, by the end of today's lecture, you should be having a very good idea of the basic definitions of very important branches of biology and the variety of scopes that they have in the current world. First of all, we have genetics over here. We will study genes in detail and their role in inheritance. तो अगर इसमें हमें सबसे पहले इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि what genes actually are. These are basically microscopic cellular material that are present in the nucleus of a cell. और वहाँ पे बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके जीन्स आ जाते हैं that basically have the genetic coding of all the information regarding the cells and the activity that is going to be performed by different types of cells. तो यही जो इंफॉर्मेशन होती है थ्रू पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं transfer of the inherited material from parent to their next generation. So this is also a very interesting area of study under the heading of biology. So related scopes की अगर हम बात करें तो you can see how genes are studied in for different purposes in different areas of research. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि forensic scientist, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डीएनए एनालिसिस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ये तमाम काम किए जा रहे होते हैं एंड ऑल यू नीड टू नो फॉर देम इज़ अ वेरी गुड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ genetics. Then we come to molecular biology that highlights the different activities that are being performed at molecular level within our cell. तो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिसमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होगी और कुछ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होके स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड भी हो रहे होते हैं. तो ये जो स्टडी है दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. So you can see the relevant scope of molecular biology that exists in different domain, also in biotechnology and pharmaceutics as well as microbiology. So बहुत सारा जो काम हो रहा है आजकल molecular biology में वो that is very much related to these different types of industries. Then we come to embryology where we will highlight the development of a single cell into a multicellular organism. ठीक है, अब एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ सिंगल सेल जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और जो वो सिंगल सेल है फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिवाइड होके एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डेवलप होता है, दिस इज व्हाट वी कवर अंडर एम्ब्रियोलॉजी. स्कोप की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली हम क्रेनियोफेशियल रीजन की डेवलपमेंट को भी कवर कर सकते हैं. यू कैन डू specialization in particularly that domain and also you can choose to be an embryologist जो कि generally overall किसी भी organism की body के formation या उसकी development को detail में study कर रहा होगा. Then we have taxonomy that has to do with this basically classification of organism into groups and subgroups and then also giving scientific names to the organism that have been discovered. तो अब टेक्सोनमी की एक दौर में क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि विद टाइम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर होती चली जा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था उनको स्टडी करना. सो टू ब्रिंग टू कम अप विद ईज ऑफ डिस्कसिंग दोज ऑर्गेनिज्म हमने उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उनका हैबिटेट हो सकता है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. तो इस बेस के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म की डिवीजन की गई है फॉर ईज ऑफ देयर स्टडी दैट कम्स अंडर टेक्सोनमी.
Then we come to paleontology, which covers the study of those organisms or animals that used to exist centuries ago, but now only their remnants can be found under the earth's surface. तो जो इनकी डिटेल स्टडी है कि उस टाइम के ऊपर ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे थे, और वजह क्या बनी कि वो विद टाइम एक्सटिंक्ट हो गए, दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. दिस कम्स अंडर पेलियंटोलॉजी. से रिलेटेड तमाम की स्टडी जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप जो है वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, दिस ऑल इज डिस्कस्ड इन these different types of careers that you can see on this slide over here. Then coming to environmental biology, where we focus on how what is the living style of a living organism, and how they interact with the surrounding environment, या फिर environment का क्या impact हो रहा है किसी भी organism के ऊपर, जैसे कि different seasons हैं या और भी कोई जो additions हो जाती हैं human beings की तरफ से, ठीक है, into the environment, जैसे कि वो मल्टीपल इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या इम्पेक्ट हो रहा है सराउंडिंग लिविंग थिंग्स के ऊपर. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में कवर करते हैं. देन कमिंग टू द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें जो सबसे अहम स्टडी या आज के दौर में भी की जा रही है वो ये है कि हम एनवायरनमेंट में किस तरह की ऐसी पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं, किस तरह एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम एजुकेट कर सकते हैं अपने लोगों को, ताकि वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और ऐसी हैबिट्स को अपनाएं जिनका कि एनवायरनमेंट के ऊपर और उसमें रहने वाली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफस्टाइल के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. सो दिस इज़ व्हाट वी कवर अंडर environmental biology. Then we have parasitology, that is you can call it as a sub branch of microbiology, जिसमें कि हम ऐसे organism को study कर रहे होते हैं that always cause a disease in a living organism through a specific mechanism. So this is what comes under parasitology. कमिंग टू देयर स्कोप, इसमें हम पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी के ऊपर फर्दर जो है कैरियर को अपने परस्यू कर सकते हैं. इसमें स्पेसिफिकली अगर हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो जो एपिडेमियोलॉजी को अगर हम हाईलाइट करें यहाँ पे, तो दैट हैज़ टू डू विद द पैटर्न ऑफ अ डिजीज दैट इज़ अकरिंग विद इन अ स्पेसिफिक सिटी और अ कंट्री. और उससे रिलेटेड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकली वो जेंडर्स किसी एक मखसूस जेंडर में कॉज हो रही है वो डिजीज़, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में है, या फिर पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन को या एक कम्युनिटी को अफेक्ट कर रही है. तो ये तमाम की तमाम जो पैटर्न होता है जो हम स्टडी करते हैं किसी भी डिजीज़ का, दैट कम्स अंडर एपिडेमियोलॉजी. Then we have immunology, that focuses on study of defense mechanism of organisms in response to invading microbes. बेसिकली क्या आ जाता है कि कुछ मखसूस बैक्टीरिया आते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इसके अलावा वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं. तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. तो इससे रिलेटेड हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स जो है, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसकी जो डिटेल स्टडी है, दैट इज़ इम्यूनोलॉजी. एंड यू कैन सी द कैरियर और स्कोप्स दैट यू कैन हैव if you have interest in pursuing your career in immunology. Coming to biotechnology, that is also a very important and a broad domain of research, जिसमें कि आज की दुनिया में बहुत सारे different aspects के ऊपर काम हो रहा है just to improve the human living standards and the way of life in the society. तो इसमें अब होता है क्या है कि बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं जिनका कि ह्यूमन हेल्थ या इसके अलावा भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट्स हम ला सकें. सो दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी.
Basically, talking about the scope, so these are the different scopes that you can join and pursue your career in once you choose biotechnology as your area of interest. Then we have entomology that focuses on the study of insects. तो जैसे बाकी organisms के different living lifestyle को, different modes of nutrition को और उनके different aspects को हम study करते हैं, तो इस तरह से जब हम insects की species के ऊपर आते हैं, so that is covered in entomology. So these are the different careers that you can find as a scope in case of entomology. Then coming to pharmacology that focuses on the development of such drugs that have some sort of positive impacts on the organs of the human body. तो इसमें हमारा मकसद क्या होता है कि जब भी कोई भी हम ऐसे केमिकल से ऐसे ड्रग्स बना सकें जिनका कि ह्यूमन जो डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट वो एक्ट करके तो ह्यूमन हेल्थ को रिस्टोर कर सकें. फार्माकोलॉजी हैज़ टू डू विद फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स that cure the disease and they do not cause any negative impact on any organ of the human body. You can see the different scope areas that you can choose if you are interested in pharmacology. So सबसे important चीज़ जिसका यहाँ पे फोकस इसके ऊपर होता है वो ये है कि कोई भी जो आप ड्रग डिज़ाइन करें उसका किसी भी हमारे ऑर्गन सिस्टम के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ रहा हो ताकि क्योर ही उस स्पेसिफिक रीजन की डिजीज़ के साथ हो rather than there is any sort of adverse effect of that particular drug. So do like our video if you find it interesting and do share it with your colleagues so they can also have an idea of what are the different important career scopes of biology if they are carrying their or pursuing their career in this domain. And in the comment section do ask us questions relevant to this video, and if you have any suggestions regarding improvement in our content, so do mention in our comment section. And finally, do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive the latest notification of our updated lectures on regular basis. Thank you very much.